दिन रे के डिस्टर्ब करिवनी जहा कि राति रे आज्ञा आज्ञा 94372 नोट करो 94372 आज्ञा 94372 आज्ञा 14986 Thank you, sir. Good evening to all learners. Very good evening, sir. Yeah, very good evening. So, perhaps all you have been already registered your roll number and name. Message box से complete कर दीजिए. Yes, sir. Okay. So, the block 4 I am going to complete today. The counseling part of block 4, that globalization or global voluntary effort and rural development. I mean, jete discussion kale, what are the different subject as we have been as inserted are discussed, and we learn about the voluntary actions in rural areas and globalization in rural areas, so that the end of this block, that is global voluntary effort and rural development. Global voluntary effort, international level voluntary effort एवं तार impact on rural development किभली सब विकास है जामे ए पर्यंत देखिले विभिन्न प्रकार छोट बड़ एवं अंतर्जातीय स्तर विभिन्न प्रकार बड़ बड़ voluntary organization that they are come forward to develop the rural areas, particularly focused to all the developing countries. Out of these developing countries, India is one of them. So, international, the big NGOs helps and come forward, help coordinate to government of India in different sectors, particularly family welfare and rural development, education, literacy, health sector, and the technical sector in every respect. That NGO and the voluntary organization helps a lot to radical change the socio-political, economic and other sectors, by which the downtrodden people or deprived persons, underprivileged group, those are living below the poverty line and facing the malnutrition, so that NGO come forward and voluntary organization helps a lot to our country's people, to the rural people. Hence, in this context, globalization has produced unprecedented changes in the socio-economic and political structures and various society all over the world. A critical consequence of globalization has been the emergence of non-state, non-profit, third sector of a global civil society. Citizens all over the world have mobilized to form voluntary organizations to shape global policies. So सारा विश्वर विभिन्न प्रकार जो दातव्य अनुष्ठान गुड़िक अच्छी बहु प्रकार सहायता से माने करिसेंती सोशियो इकोनॉमिक चेंज करिबा पई डेवलपिंग विकास उन्मुखी राष्ट्र मानक सहायता करिबा पई तांकर सामाजिक अर्थनैतिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यगत शिक्षागत ढांचा कृषिर विकास इत्यादि पई यथेष्ट सहायता करिसेंती. So that nature and meaning of globalization. तमे जानि थबो globalization गोटा टर्म एथिरे अछि ए ब्लॉग रे global voluntary effort and rural development. So I mean first of all try to understand about the globalization, nature and meaning of globalization. जगतीकरण ओडिया रे कहै जाय जगतीकरण बा विश्वीकरण हैला, that to make the country's economic free, to make the country's economic free. मैं आगुरु बहुत समय डिस्कशन करिछि ग्लोबलाइजेशन ऊपर, तमे जानि थिबो द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबलाइजेशन भलो भाबे टिके बुझ लर्नर्स, भलो भाबे टिके बुझ. The phenomenon of globalization is increasingly become all pervasive in modern society. Not only has it found a center stage in academic discourse, it has also become equally manifested in political practices,
business concern, journalism, and entertainment. So that प्रत्येक क्षेत्र रे ग्लोबलाइजेशन कोऑपरेशन ग्लोबलाइजेशन द्वारा सब किछि बहुत किछि संभव होई परिछि सारा पृथ्वी रे. सो ग्लोबलाइजेशन बा फ्री इकोनॉमी भारत स्टार्ट कला केबे इंडिया मागुर कहिछि ड्यूरिंग 1991. तार कारण कोन पे व्हाट आर द रीजन व्हाई आवर कंट्री टर्न बैक टू द ग्लोबलाइजेशन और टू मेक आवर कंट्रीज इकोनॉमिक फ्री करि दबा. बिकॉज मु बारंबार कहिछि गोटे कथा इंडिया इज ए कैपिटल डेफिशिएंसी कंट्री बट लेबर सरप्लस कंट्री. सेही बळी सारा विश्वर वर्तमान अर्थनीति राजनीति अवस्था सामाजिक अवस्था सब गुड़ाक जगतीकरण हो गला जो आमे अमेरिका रे जहा अवेलेबल होची चाइना रे जहा अवेलेबल होची आमे मुहूर्तक मध्य रे हम घरे आसिकरी सेल्समैन डिलीवरी कर दे जाउची जिंस गुड्स कमोडिटी देखुछ ना नहीं चर्चिता. हेलो हाँ यस सर Yes, sir. वर्तमान ये जो ग्लोबलाइजेशन दैट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आमे फोन कर देले बस मोबाइल इंटरनेट बिजनेस माध्यम रे आमे ट्रांजैक्शन कर देले इमीडिएटली जो प्रोडक्ट जेते बेले जो मोमेंट रे चाहउछन हम घर आसी डिलीवरी हो जाउछ. सो दिस इज द वेरी गुड इंपैक्ट द होम डिलीवरी सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. सो मार्क वन पॉइंट विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये आसे व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फोकस करबा ग्लोबलाइजेशन को जानिबा पे हेले हमको प्रथम कोन करबा पे पड़िबो काहे कि भारत सेति मध्य गोटे देश ग्लोबलाइजेशन को आधार कला बा जगतीकरण को काहे कि फोकस कला कारण भारत होची गोटे श्रम बहुल राष्ट्र किंतु पुंजीर अभाव राष्ट्र. दैट मीन्स कैपिटल डेफिशिएंसी बट लेबर सफिशिएंसी. वी हैव डेंस पॉपुलेशन इन अर्बन as well as in rural area. सहर ग्रामांचल रे घनता जनसंख्या घनता पूर्ण देश आम देश गोटे तेणु एठी कौन दरकार ड्यू टू पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट मॉडर्नाइजेशन इज नॉट हेल्ड सो फार आधुनिकीकरण हो पारि नहीं आमर श्रम बहुल पुंजी वी हैव प्लेंटी सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेस. इंडिया possesses huge deposit of natural resources that is God's gift resources. ईश्वरन को भगवान का गत विभिन्न प्रकार संपद भरपूर हो रही भारत रे. सो जते प्रकार रिसोर्सेस रहिला फॉरेस्ट रिसोर्सेस लैंड रिसोर्सेस वाटर रिसोर्सेस मिनरल रिसोर्स क्वालिटेटिव मिनरल रिसोर्सेस भारत रे डिपोजिट हे रही जोटा फॉरेन कंट्री सब चाइना जापान कोरिया को सब एक्सपोर्ट कर दिया जाउछि. हैं दैट इज रॉन्ग प्रोसेस. आमे एक्सपोर्ट न करी आम देश रे इंडस्ट्रियलाइजेशन कले आमे बेनिफिट हेइतांते किंतु सरकार पॉलिसी जहा अछि से अनुसार एक्सपोर्ट कर दिया जाउछि. तबे कथा होछि एते डिपोजिट थिला भितरे आम देश रे काहे कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंटी सोशल एक्टिविटीज काहे कि सब घटुछि. तेणु वी रिक्वायर ह्यूज फॉरेन कैपिटल जेहेतु आम देश रे कैपिटल रिसोर्सेस पुंजीर शॉर्टेज रहउछि. So that government globalized, opened the country's economy. All the barriers, obstacles that was existed international level, that it has been ignored. सरकार एगडा को इग्नोर कर देले बा रिहाती कर देले. अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे जेति की बॉर्डर थिला जेति की आईन कानून स्ट्रांग थिला सरकार सेगडा सब कोहळ कर देले. फल रे the MNC multinational corporation enter into our country and established and revived the world industries. Renovation was held and expansion of the modern industry are also held. So to utilize the natural resources, particularly mineral resources and other resources that deposited in our country, so that सेथि पई आम देश रे वर्तमान देखुथबो मॉडर्नाइजेशन कंप्यूटराइजेशन इंटरनेट सिस्टम मोबाइल सिस्टम बैंकिंग सब क्षेत्र रे मोबाइल सिस्टम. सो द जनरल ग्लोबलाइजेशन हैव बीन कंसीडर्ड इंटरनेशनलाइजेशन विश्वकरण करा जिवो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंटरैक्शन एक्सचेंज एंड इंडिपेंडेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट. आधुनिक राष्ट्र मध्य रे
देश देश भितर सहयोग अर्थनैतिक मानदंड को दृढ़ करने संपर्क स्थापन करवा सोशियो पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सो सेकेंडली लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होची लिबरलाइजेशन कोहल नीति अवलंबन करवा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्टेट imposed barriers on movement of between countries so as to create an open and integrated economic and political world order so jete liberalization कोहल नीति हेबा फल रे आंतर्जातिक जो बैरियर्स थिला ऑब्स्टैकल्स थिला प्रतिबंधक सेगडा सब उठे दिया गला फल रे गमनागमन जीवा आसीबा देश विदेश सहित अति सहज हो गला हां थर्ड होची यूनिवर्सलाइजेशन increase spread of various objective and share experience among people लोक मानक मध्य रे जो एक्सपीरियंस सब अछि देश देश भितर ज्ञान रो आदान प्रदान आम देश रे जने चाहिबो अमेरिका रे पाठ पढिबा पई से मध्य सहज रे वर्तमान जाई परला एवं से देश रु मध्य आम देश को आसी परला आम देश लोक माने चाहिले मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऊपर ट्रेनिंग से माने नै परिबे विदेश रे तो यही सब विभिन्न प्रकार यूनिवर्सलाइजेशन संभव होला तापरे वेस्टर्नाइजेशन होला वेस्टर्नाइजेशन पश्चिम पृथ्वी रा पश्चिमांचल देश सहित यूरोपियन कंट्री सहित स्पेशली व्हेन कनेक्टेड आवर कंट्री सो दैट वी borrowed thought experience from यूरोपियन कंट्री ये सब आम देश राशि प्रवेश कला जा फल देखुथिबो प्रत्येक सोशल ट्रेडिशन कल्चर सब चेंज हो वर्तमान आम देश में सो सम इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीनिंग द ग्लोबलाइजेशन बिकम क्लियर वी अंडरस्टैंड द नेचर सम वाइटल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सो लार्ज कंपनीज एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एजेंसी एंड एसोसिएशन हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रांस बॉर्डर नेटवर्क से ग्लोबलाइजेशन हवा फल रे आम देश को एंट्री कला बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैला ए ग्लोबलाइजेशन पर फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल गोटा बड़ा इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रेन गोटा बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफाम एई भली अनेक हैंड टू हैंड एई भली सब बड़ा बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हम देश रे प्रवेश करी पिला मानकू अडल्ट माने 14 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा देबा पिला मानकर स्वास्थ्य सुरक्षा करबा एवं कृषि रो विकास करबा नाबाड़ा सहायता रे एवं अन्य गाँ गंडा अंचल रो विकास पथ रे आगे नवा पई इस बड़ बड़ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब आसी पहुंचले सो एतत व्यतीत आ गुण होची द इश्यू पर्टेनिंग टू लैंड वाटर फॉरेस्ट एग्रीकल्चर पॉवर्टी हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैमिनीज नेचुरल डिजास्टर हेल्थ child care and many more and no isolated phenomena एई भली बहुत प्रकार माने हमकु ए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे हमकु देश गाँ गंडा अंचल लोक माने सहायता पाइथिले ड्यू टू ओनली ग्लोबलाइजेशन सिस्टम इन आवर कंट्री सो ग्लोबलाइजेशन एंड एनजीओ सो एई भली सब बड़ बड़ एनजीओ सब एंट्री करले हम देश रे सो एनजीओ माने कोन ग्लोबलाइजेशन एंड एनजीओ किभली लिंक रहिले एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ helps a lot to grow and develop the rural areas. The process of globalization of NGO, the effect of globalization of communication has been that it become physically, financially and feasible for small voluntary association to establish and maintain cooperation and with like-minded other groups based on thousands of miles apart from each other. Thus, it became very easy for voluntary organization NGO to operate transnationally, acquire such potential as is conducive for transnational operations. आम देश को जो एंट्री कला सब बड़ बड़ एनजीओ से सब गाँ गंडा अंचल जो क्षुद्र क्षुद्र छोट छोट एनजीओ सब थिला रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो तांको सहित मिलित भाव में काम करी आम देशर विभिन्न प्रकार
अर्थनैतिक सामाजिक संस्कार से आनिथिले एवं अन्य क्षेत्र रे ग्रोथ डेवलपमेंट विकास पाई पथ परिष्कार कर देथिले। सो यूनाइटेड नेशंस एंड एनजीओ आमर जो जाति संघ अछि से किभली सबु एनजीओ मानकू मध्य कोऑपरेशन करिथाय जाति संघ माध्यम रे बहुत एनजीओ जाति संघ माध्यम रे यूनाइटेड नेशंस माध्यम रे रेजिस्ट्रेशन करा जाय से गुडी को विभिन्न देश को साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री सब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश एवं बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका ये सब डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री मान को बहुत सहायता करूछंती। द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हम जाति संघर भूमिका सब कौन and its institution in international arena has changed since the rise of globalization। हम देश रे जो ग्लोबलाइजेशन हवा फल जाति संघ बहुत प्रकार कोऑपरेशन करितला थ्रू एनजीओ। They have taken on an increasing range of functions and they have also become much more involved within societies। A critical consequence of globalization has been that institution of United Nations enter into direct superstate relationship with NGO। The NGO engage in such wave of globalization with United Nations institution। United Nations institution माध्यम रे बहुत प्रकार volunteer organization and NGO प्रवेश करिथिले। So that economic and social council हमर गोटे अछि economic and social council। The United Nations, the term NGO has been synonymous with the group that eligible for economic and social council consultative status। The United Nations definition of an acceptable NGO has its inherent economic and social council statute। The way it has been applied in the subject following some principle, it means that an NGO यूनाइटेड नेशंस सहित किभली संपर्क रखिबो। यूनाइट जदि जो एनजीओ बा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम करिवो विभिन्न देश रे तार प्रिंसिपल गुडी को कोन हबा दरकार ता माने जाति संघर प्रिंसिपल ऊपर आधारित हबा दरकार। यूनाइटेड दैट ऑल द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। सो कोन should support the aim and work of the United Nations। जाति संघ जो कार्य जहा करिबा पई इच्छा करूथिबो एनजीओ माने ताको सपोर्ट करिबा दरकार। हां जाति संघर गाइडलाइन प्रिंसिपल अनुसार हमें विभिन्न देश रे काम करिबू। सो सेकेंडली should be a representative body with identifiable headquarters and officers responsible to a democratic policy making कॉन्फ्रेंस। सो गणतांत्रिक पद्धति रे जनलेखा रिप्रेजेंटेटिव रहिबे जाति संघर जनलेखा रिप्रेजेंटेटिव मध्य एई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रे रहिबे। थर्डली कैन नॉट बी ए प्रॉफिट मेकिंग बॉडी। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु लोक शहर ग्रामांचल मानकर विकास एवं जन उन्नयनमूलक कार्य करूछि तेणु दी एनजीओ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट इन्वॉल्व इन प्रॉफिट मोटिव लाभदायक उद्देश्य से काम करिवो नाही। कैन नॉट यूज और एडवोकेट वायलेंस। देश मानकरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन रही कोन से वायलेंस हिंसात्मक आचरण काम करि परिबे नाही। मस्ट रेस्पेक्ट द नॉर्म्स एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। कोनसी देश रे जदि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम करूची देशर बा राष्ट्रर तार अंतर्देशीय आईनी कानून उपरे हस्तक्षेप करि परिबे नाही। ए सब नियम कानून से सब अडॉप्ट कले तेणु एनजीओ कौन कला कोआलिशन सब कला चुक्तिबद्ध सब कला यूनाइटेड नेशंस सहित। सो देयर इज ए लॉन्ग हिस्ट्री बिल्डिंग ऑफ कोआलिशंस बाय एनजीओ एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड अलायंस यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन गोटा अछि हमर यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन क्रिश्चियन संस्था तरफ एथुर प्रचुर परिमाण डोनेशन आता है स्कूल कॉलेज मानक सब सृष्टि करा जाय थाए हैला। यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन गोटे अछि हमर कटक रे अछि यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन।
सो विभिन्न प्रकार क्रिश्चियन एसोसिएशन स्कूल कॉलेज मान को मध्य डोनेट करी थाए सो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस कोलिशन सब को बड़ा सब बड़ बड़ इंटरनेशनल एनजीओ and that linked with United Nations like Young Men's Christian Association and International Council for Nurses, International Society for Labor and Law Legislation and the like. ଏଇଭଳି ସବୁ National Red Cross and Red Crescent are both NGOs and government auxiliary, yet there are international federation places itself among the world leading NGO. ଏଇଭଳି ସବୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଲିଡିଂ ଏନଜିଓ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ହେଲା so there is coalition between NGOs and the our voluntary organization with United Nations. Globalization next aspect in this block, that is globalization, development and NGOs. So Genesis mainstream approach of development. So post World War, Second World War pare United States of America and United Kingdom strive to create a stable international order with institutional support of United Nations. It affiliates the International Monetary Fund. Amar international अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पांठी गोटी अछि जानिथबो वर्ल्ड बैंक रो गोटे पार्ट so international monetary fund and the world bank plus general agreement on tariff and trade takwa jay short re GATT boli kuha jay GATT general agreement on tariffs and trade तापर होची इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वर्ल्ड बैंक एई भली सब गठन करा गला केते बेले द्वितीय विश्व युद्ध परे परे काहे के मानकर उद्देश्य कोन विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पांठी एवं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड व्यवसाय पई ए सब ऑर्गेनाइजेशन गठन करा गला तेनु इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड बैंक माध्यम रे विभिन्न देश को सहायता करबा मध्य यूनाइटेड नेशंस जाति संघर मुख्य उद्देश्य थिला कारण द्वितीय विश्व युद्ध परे परे पृथ्वी रे बहु देश अर्थनैतिक भुसुड़ी पड़िथिला तेनु ए सब गठन करा गला so the latter three institutions furnished and the foundation of a liberal international economic order based on the pursuit of free trade with appropriate provision of intervention of markets. This has been known as embedded liberalism. So एगुड़ी को सबु liberalism वेरे अंतर्राष्ट्रीय जो GATT रहिला general agreement on tariff and trade एटा commercial activity पाई लिबराल कमर्शियल एक्टिविटी पाई ये गोटे अनुष्ठान रहला व्यवसाय देश देश भीतर कि भली व्यवसाय संभव होई परिबो एवं देशर गोटे देशर विभिन्न गुड्स कमोडिटी अन्य देश रे नै करी पहुंचाइबा एवं अन्य देश रु आनी के आम देश रे पहुंचाइबा ये GATT रो मुख्य उद्देश्य रहला ता व्यतीत वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एगुडा सब रहिला लिबराल वे रे देश देश मान को सब विभिन्न प्रकार आर्थिक सहायता करबा सो अल्टरनेटिव अप्रोच आउ कोन सब डेवलपमेंट अछि वेरियस एनजीओज सच एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट मूवमेंट हैव कैंपेन एंड स्ट्राइव्ड फॉर सच डेवलपमेंट एज मेनी enhance the essential aspects of this alternative approach grassroot movement माने तृणमूल स्तर रे ता माने गाँ रो अति अनुन्नत अंचल मानकरे have emerged to pursue such specific issue as like for example नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिया रे चलिला तापर चिपको मूवमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज इन इंडिया परिवेश को सुरक्षा दवा पाई एबल सब भारत रे परिवेशिक एनजीओ परिवेष्टन को केवल सुरक्षा दवा कारण मनुष्य प्रकृति कोल रे जन्म होईची प्रकृति के यदि सुरक्षा न दवा ताले पृथ्वी ध्वंस होई जेबो एवं विभिन्न प्रकार रोगाक्रांत लोक माने मृत्यु मुखरे पड़ी जिवे such movement found support from the green movement worldwide diverse indigenous group and women got a chance to express their views during the preparatory process of the United Nations Conference on Environment and
डेवलपमेंट ताको जाए अनसेड इन रियो डी जानेरियो ब्राजिल 1992 रे गोटा विराट ब्राजिल रियो डी जानेरियो गोटा जगह अच्छी जोठी की गोटा परिवेश उपर विराट आंदोलन होता एवं सभा सभा आयोजन करा जायथिला ब्राजिल रो रियो डी जानेरियो रे 1992 रे so all the world the different numbers of countries are the members of this Brazilian Rio de Janeiro World Environment Day, a world environment meeting as held in Brazil during 1992. The educationists, the environmentalists, the politicians, the social reformators, students, यही सब लोक माने सेठी सब जाइकरी परिवेशविद शिक्षाविद राजनीतिज्ञ छात्र छात्री तथा वैज्ञानिक ए सभा समिति रे जाइकरी सभारे जोग दैथिले पृथ्वीर परिवेश को किभली सुरक्षा दिया जाय परिबो एवं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे किभली सारा विश्व सुंदर विश्व को आमे सुरक्षा दे परिबा जदि सुरक्षा न दबा ताहले सारा पृथ्वी ध्वंस होई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हवा फल रे ये सब अरेंजमेंट करा जायथिला सो all these are the globalization process. So next jiba ame global concern of rural development. Global concern rural development ki bholi volunteer organization माध्यम रे जा सब हेइथिला आमे सब आगुरु सब ए विषय सब अनेक डिस्कशन करिछन एतद व्यतीत the millennium development goals in rural areas, the overall cumulative effect of above discussed jaha we have been already discussed has been that it brought the concern of agriculture and rural development to the center stage of mainstream agenda of development. The globalization method re voluntary organization the mainstream is to develop the rural areas. It was realized that 3/4 of world poor live in rural areas of developing countries. Their existence, livelihoods and overall well-being tied up with the conditions of agriculture in these countries. Agricultural development विकास पाई मध्य ए डेवलपिंग कंट्री मानकरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वीर विभिन्न वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भारत को सहायता करि देथिला. There is a realization among the states of developed countries and international funding institution, that is IMF, international funding institution बा जे देथा IMF, International Monetary Fund and World Bank, Vishwa Bank, that poverty persists because of many factors, prominent among them being काहे कि World Bank एवं International Monetary Fund विभिन्न प्रकार विभिन्न समय रे प्रचुर अर्थ सैंक्शन करुथिले भारत को एवं अन्य देश मानकु कोन तार कारण policies that directly or indirectly favor large scale farmers over less productive or small holding farmers. क्षुद्र चाषी एवं नाममात्र चाषी मानकु सहायता मध्य जोगुथिला. द्वितीय रे पॉलिसी that favor urban center over rural areas. Urban center nearby villages मध्य गोटा अर्बन एरिया अच्छी ता पाखापाखि अंचल मानक जो गाँ गंडा अच्छी तार विकास पाई अर्बन एरिया रे प्रचुर परिमाण मध्य अर्बन एरिया विकास पाई मध्य वर्ल्ड बैंक IMF अर्थ सहायता करुथिले. Next, insufficient recognition of the role played by the subsistence and reproductive labor. जो माने reproductive labor अछंती सेमानंकु एभली they turn back to the efficiency and how to create the efficiency and skill. They are given training facilities through the funds as provided by the World Bank and IMF. So inadequate compensation for agricultural laborers, drastic decline in investment and assistance in regard to rural development. गोटे देश रे जेतबेले विकास पथरे यदि अर्थ न हबो ताले से क्षेत्र रे विभिन्न क्षेत्र रे यदि अर्थ सहायता सफिशिएंट न हबो ताले वर्ल्ड बैंक एंड IMF मध्ये कम फॉरवर्ड टू सप्लाई टू
sanction the funds for the development. So, goals and aim, the millennium development goals and aim सब आउ कौन सब अच्छी हम देखिबा डेवलपमेंटल गोल सब eradicate आमे सब जहाँ डिस्कशन कले eradicate extreme poverty and hunger गोटा देशरू अतिरिक्त चरम दारिद्र्य अवस्था को दूरीकरण करिबा मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंटल गोल्स सो एठी कोन ना reduce by half the portion of people living on less than a day meal a day and reduce the half of the portion people who suffer from hunger minimum 50% लोक माने जो माने क्षुधारे जीवन बिताउचंती सेमानंकु किबळी खाद्य जोगै दबा ए सब होउची वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विदेशी बड़ बड़ फॉरेन एनजीओ मानकर कार्यक्रम अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को आमर सर्व शिक्षा अभियान जे भली आमर देश रे ओडिसा रे चालू रहितला सर्व शिक्षा अभियान ये मध्य वर्ल्ड फंडिंग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे ए किछि वर्ष सर्व शिक्षा अभियान चलिला तापर बंद हे गला तो जे पर्यंत फंडिंग अवेलेबल थिला से पर्यंत चालू रहितला सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान दैट इज स्टॉप बाय द गवर्नमेंट सो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन महिला पुरुष जो डिस्क्रिमिनेशन रहउची डिस्क्रिमिनेशन रहउची महिला मान पुरुष मान को अग्राधिकार दबा महिला मान को पछरे पकाई दबा ए डिस्क्रिमिनेशन पई सचेतनता शिविर सबु आरंभ करबा एवं महिला मान को सबु क्षेत्र रे रिजर्वेशन माध्यम रे सहायता जोगे दबा ये मध्य वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्ल्ड बैंक जो अच्छी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विभिन्न उद्देश्य रे महिला मानकर विकास पई सहायता करि थाए eliminate gender disparities in primary and secondary education प्राइमरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर रे आमे देखुचंती से समय थिला केते पुओ पिला माने बेसी आसी पाठ पढुतले किंतु ओडे झियोटी से पाठ पढिया पय स्कोप पाउनथला तेणु ये जो जेंडर इक्वालिटी की डिस्पैरिटी दूर करबा पय मध्य फंड्स अवेलेबल होतला नेक्स्ट होची रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी आमे जेते प्रकार डिस्कशन विभिन्न ब्लॉक रु आमे पढी पढी के आसिले रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी इंप्रूव मटेरियल मेंटल मैटरनल हेल्थ केतरा पॉइंट एठी लिखिलो टिके नोट करो खाता कलम अछि की हेलो Yes, sir. Yes, sir. केतरा पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिलो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम जेते जहाँ डिस्कशन करके आसले वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ये केते गुडे पॉइंट होची मुख्य एया को बेस करी मध्ये ओटा लॉन्ग क्वेश्चन लिखि दि परिबो सो पॉइंट 1 लिखो एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर eradicate extreme poverty and hunger point 2 achieve universal primary education Point 3. Promote gender equality and empower women. Promote gender equality and empower women. Point 4. Reduce child mortality. Reduce child mortality. Point 5. Improve maternal health. Improve maternal health.
तामाने टू रिड्यूस द मैटरनाल मोर्टालिटी रेशियो मातृ मृत्युहार को ह्रास करवा है महिला माने प्रेग्नेंसी समय रे डेलीवरी समय रे बहुत मृत्यु मुखरे पड़ी था उपयुक्त चिकित्सा सहायता नदेले डेलीवरी समय रे बहुत मृत्यु मुखरे पड़ी था तेणु मैटरनाल मोर्टालिटी रेशियो टाको कमेवा ए मध्य उद्देश्य थिला। नेक्स्ट पॉइंट होची combat HIV AIDS malaria and other disease combat combat HIV AIDS malaria and other disease next point 6 ensure point 7 of it. Point 7 ensure environmental sustainability. Ensure environmental sustainability. Point 8 develop a global partnership for development. Develop a global partnership. Develop a global partnership of development. तो ये सब मिलेनियम गोल सब थिला जे विकास पथरे प्रत्येक क्षेत्र रे पिला मानकर अपपृष्टि महिला मानकर मृत्यु हार एवं परिवेश सुरक्षा दबा HIV एड्स को कंट्रोल करवा एवं जेंडर डिस्पैरिटी दूर करवा ये सब मिलेनियम सब गोल थिला। सो किछि अंश रे एगुडी को संपूर्ण 100% अचीवमेंट न होले भी किछि परिमाण रे संभव होई पारुछि। सो सॉल्व बा समस्या समाधान होई पारुछि। सो नेक्स्ट जीवा ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म फॉर रूरल डेवलपमेंट। ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म को बळे सब को हेड रे सब ग्लोबल डोनर सब थांती एवं को हिसाब रे समान सब सैंक्शन करि थांती बा फंड डोनेशन बा डोनेट करि थांती विभिन्न देश मान को डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री मान को। सो शॉर्ट फॉर्म को कहा जाए GDPRD। GDPRD फुल फॉर्म वाला ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्लेटफॉर्म आमे किभଳି सृष्टि करबा ग्लोबल डोनर हिसाब रे विभिन्न देश आगे आसीबे आम देश को सहायता करबा पई बा पृथ्वी रो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री मान को हेल्प कोऑपरेशन करबा पई किभଳି प्लेटफॉर्म वी शुड क्रिएट इन इंटरनेशनल लेवल बाय व्हिच वी कैन achieve or we can fulfill our dream automatically. So global donor platform for rural development. Most states of developed countries, various United Nations bodies, International Monetary Fund, World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, Regional Development Bank, USA Agency for International Development बैंक ये सब बहुत प्रकार अनुष्ठान अच्छे GPRD को जाए ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म यही माने सब होचंदी प्लेटफॉर्म एरिया जो सब फंड सब आस्ता है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन पाई। सो आउ थरे कहि दोची से गडा को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, USA एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, Britain's Department for International Development, International Development Association, non-governmental organization, यही भली सब विभिन्न प्रकार organization अछि and many more are directly or indirectly engaged in rural development in the developing country. विकास उन्मुखी राष्ट्र गुडी को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे एते गुडी अनुष्ठान अछि सहायता जोगै दिथांती। सो ऑब्जेक्टिव ए जो ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म फॉर रूरल डेवलपमेंट बा GPRD तार ऑब्जेक्टिव सब कोन अछि मुख्य उद्देश्य काहे से सब एते डोनेट करूछि कारण सारा विश्व जगत किभଳି अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रत्येक क्षेत्र रे
सबु देश विकास पथरे आगे मुख्य उद्देश्य होची सेठी तबे मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट रे हम देखिबा improve the living conditions of people in rural area सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करबा पई जदि सहरांचल अर्बन एरिया लोक माने आनंद उल्लास रे जीविका निर्वाह करिवे गां गंडा अंचल कोन पाप करथिले से माने को जीवन ग्रीफ डेस्पेयर पेन नैराश्य जंत्रणा हताश रे गति करिवो कि तेणु लिविंग स्टैंडर्ड बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया इक्विटी किभଳି मेंटेन करा जिवो तेणु ए जो जीपीआरडी जीडीपीआरडी ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म फॉर रूरल डेवलपमेंट एमाने सहायता सब करूथले गां गंडार अंचलर विकास पाई कारण नचेत कोन घटिबो ना माइग्रेशन घटिबो लोक माने गां गंडा छाड़ी सहरांचल को सब धाइबे तो सहरांचल गोटा विराट गहली सृष्टि हबो परिवेश नष्ट हबो सहरांचल तेणु गाँव विकास हेले सहर विकास हम सेकेंड हूँ स्ट्रेंथन द लाइवलीहुड्स ऑफ रूरल पीपुल गाँ गंडा अंचल लोक मानकर कौन लाइवलीहुड जीविका किभଳି वृद्धि पाइबो इंप्रूव फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल्स प्रत्येक क्षेत्र से मानकर किभଳି लाइवलीहुड न्यूट्रिशन वृद्धि पाइबो ता पई मध्य ए जो डोनर माने सब सहायता करूथले आउ कोन करूथले ए जो ग्लोबल डोनर प्लेटफॉर्म फॉर रूरल डेवलपमेंट जो माने जीडीपीआरडी कोन सहायता करथले कोन पई रिड्यूस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट particularly by creating a policy environment that may stimulate affordable and stable food prices and supporting long term employment and incomes for rural poor or rural people. Next objective is enhance and sustainable management of natural resources. Enhance and sustainable management of natural resources. Natural resources को आमे समूले विध्वंस करबा उचित नुह आम जेनेरेशन वर्तमान ताकू जदि जेतिकी प्राकृतिक संबल अछि ताकू जदि सबु नष्ट भष्ट करदेबा ताहले भविष्यत जेनेरेशन पई पीढ़ी पई हम कोन रखिबा किछि नथिबो द फ्यूचर जेनेरेशन विल ऑटोमेटिकली दे विल डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली इफ वी विल नॉट रिजर्व or store some natural resources for our future generation. We should use and simultaneously we should keep as reserve as storage for our future generation. A sustainable development in every respect for forest product, mineral resources, and in every respect we should keep or store for our future generation. Otherwise, there will be big negative impact will fall on our future generation. So, enhance and sustainable management of natural resources. Mitigate various risk related of health, economic, and environment faced by people in agriculture. कृषि क्षेत्र रे पारिवेशिक एवं विभिन्न प्रकार आमर स्वास्थ्यगत बा अर्थनैतिक समस्या चाषी माने जो फेस करूचंती तांकु सुरक्षा दबा मध्य एई डोनर कंट्री माने बा अनुष्ठान गुडी को सहायता करितांती नेक्स्ट लिंक रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट विथ एक्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल रूरल पीपल गांगंडा अंचल लोक मानक पाखरे जहा अंतर्निहित दक्षता गुण कौशल जहा सब विद्या अछि से गुडी को सब केमि प्रॉपर्ली यूटिलाइज होई परिबो तेणु सेति पई फंड्स दरकार पड़ुतला एई डोनर ऑर्गेनाइजेशन माने फंड्स सब जोगौतले और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे नेक्स्ट आ कोन हेपर टू इंप्रूव डोनर अंडरस्टैंडिंग of different needs, priorities, and that limit and influence different individuals both within and between household and rural areas. So घरे घरे यार सुविधा सुजोग ए सबु सहायता सबु ए डोनर कंट्री मानक द्वारा प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कराई छी तो सहायता जोगे दिया होतला गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीडीपीआरडी गाइडिंग प्रिंसिपल कौन सब गाइड सब थिला ए जो जीडीपीआरडी पीपल centered and pro poor change people लोक माने जोगुडा को अति
गरीब अवस्था को जाउथिले सेमानक किभଳି जो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीडीपीआरडी को गाइड प्रिंसिपल ले लोक मानक सब सहायता करूथिले so rural people must be involved in determining the needs priority interest and challenge pertaining to rural development गाँ गंडा अंचल लोक माने तांकर आवश्यक तांकर एवं इंटरेस्ट तांकर इच्छा तांकर प्रायोरिटी बेसिस रे से जहाँ चाहूंती से गुड़िक विकास करने आमर ये जो डोनर कंट्री माने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मानक गाइड करूथिले कौन गाँ गंडार अंचल में अभाव अच्छी लोक माने कौन चाहूंती लोक मानकर असुविधा कौन अच्छी से गुड़िक विकास करने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ए डोनर अनुष्ठान मानक द्वारा सहायता पाउथिले सो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनुष्ठानिक आर्थिक परिचालना किभଳି सब करा जाय परबो दिस इज वन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल ग्रेटर एम्फासिस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन प्रमोटिंग एंड एम्पावरिंग रूरल institution beginning with community and leading up to the national levels. Efforts must be made to enhance fiscal decentralization so that funds are readily available to the support local institution. जो लोकल इंस्टीट्यूशन सब अच्छी गाँ गंडा अंचल रे जो गुड़िक हस्तकर्म बा जो गुड़िक ट्रेडिशनल स्किल नॉलेज जा माध्यम रे लोक मान तांका जीविका निर्वाह करूछंती हस्तचालित तंत्र बा अन्यान्य आखु पेड़ा मेसिन बा गोपालन करिबा मेष पालन करिबा छेली पालन करिबा कुकुड़ा चाष करिबा एई सब विभिन्न प्रकार सहायता पाई मध्य जोगे देउथले जा लोक मानकर आवश्यकता अछि कृषि रो विकास कराइबा ए सब मध्य गाइडिंग प्रिंसिपल अंतर्भुक्त होतला डिमांड ड्राइवन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन डिमांड अनुसार विभिन्न प्रकार प्लानिंग स्ट्रैटेजी मध्य ए डोनर कंट्री माने सबु स्ट्रैटेजी प्लानिंग योजना एवं कौशल मध्य वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन मानकु जोगे देउथला सो पब्लिक प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप नेक्स्ट गाइडिंग थिला कोन प्रिंसिपल पब्लिक प्राइवेट सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप गोटा गाइडिंग प्रिंसिपल थिला दैट मींस ऑल स्टेक होल्डर्स must work together to improve rural people livelihoods, food security and overall well-being. This calls for partnership between sectors such as agriculture, health, education, etc. as well as between public, private and civil society institutions. सरकारी बेसरकारी उद्योग मिलित सहायता रे मध्य बहु काम करा जायछि देश रे ये पर्यंत सुधा दैट इज गोइंग ऑन दैट इज वन ऑनगोइंग प्रोसेस ये पर्यंत मध्य सरकार विभिन्न क्षेत्र में शिक्षा अनुष्ठान स्थापन करवा स्वास्थ्य अनुष्ठान स्थापन करवा जो बड़ बड़ सब मेडिकल होची बड़ बड़ इंडस्ट्री मानक होची एवं बड़ बड़ शिक्षा अनुष्ठान होची पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन वर्तमान सब चालू रही जानिथिबो बहु अनुष्ठान वर्तमान सब पब्लिक प्राइवेट वेंचर माध्यम रे कोऑपरेशन रे फंड्स रे इन्वेस्टमेंट रे आम देश रे सृष्टि होची आम ओडिसा रे मध्य बहुत सरकारी बेसरकारी स्वास्थ्य अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान गढ़ी उठलानी एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन माध्य गढ़ी उठलानी सो बाय व्हिच दैट कंट्री विल ग्रो एंड डेवलप ऑटोमेटिकली सो एनहांसिंग सस्टेनेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल होची दैट इज डोनर कंट्री मानकर एनहांसिंग द सस्टेनेबल and of natural resources. Agricultural production as a base of millions of rural livelihood strategy and linked to the sustainable use of soil, water and biological diversity. So, agricultural production ये जो मृत्तिका हो जल हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये गुड़िक सब गुड़िक चाषबास उपर मध्य निर्भर करिथा सो ए लैक ऑफ अटेंशन टू द sustainable use of water, land and agrobiodiversity can spell disaster for a ecosystem. जदि आमे ठीक भाव रे व्यवहार न करि परिबा कोगुड़िक जल natural resources, water resources, land resources and agro biodiversity etc. जदि आमे ठीक भाव रे व्यवहार न करि परिबा ताले कोन घटिबो ना डिजास्टर घटिबो आम देश रे नेचुरल डिजास्टर घटिबो
विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दुर्विपाक आसी पहुंचो तेणु एगुड़िक प्राकृतिक डिजास्टर को प्रोटेक्शन दूरेबा आमको गाइडिंग प्रिंसिपल को सब अनुसरण करबा पड़ो सो नेक्स्ट जीवा आउ सब कौन अच्छी ग्लोबल वॉलंटरी एफर्ट सब रूरल डेवलपमेंट रोल एंड एक्सपीरियंस इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रूरल डेवलपमेंट इश्यू एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस ग्लोबल सिग्निफिकेंस सब कौन आम देश सब एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट संभव होइछि सो इश्यू that concerning water including tenure scarcity competition climatic change security and downstream upstream effects and the concept of blue and green water are crucially linked to agriculture and rural development ये सब जेते scarcity हो competition हो climatic change हो security हो water including tenure हो या पर एई इश्यू गुडा का ऊपर विशेष करी एग्रीकल्चर परिवेश एवं नेचुरल रिसोर्सेस को बेस करी या पर सब ध्यान दिया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वॉलंटरी एफर्ट स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर स्मॉल क्षुद्र चाषी माने जो मान तांका पई मध्य बहुत प्रकार सहायता करा है स्मॉल होल्डर मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स remain the backbone of food security प्रकृत रे चाष किए करे जमी मालिक करे नाही एई कृषक माने भागदारी चाषी माने लैंडलेस लेबरर जो मानकर बिल्कुल चाष जमी नाही जो माने मार्जिनल फार्मर एई माने प्रकृत जमीर सुरक्षा नै थांती एई माने प्रकृत रे चाषबास करि थांती ए माने देश को फूड सिक्योरिटी देई थांती देश को खाद्य समस्या दूर करै थांती in local economy in many rural household and community across the globe सारा विश्व रे प्रकृत रे चाषी माने सारा विश्व रे पई हमर फूड सिक्योरिटी देई थांती the ever increasing industrialized agriculture has put the future of small holders at risk वर्तमान कोन देखा जाउची जो शिल्पायन सारा पृथ्वी रे इंडस्ट्रियलाइजेशन होउची क्षुद्र चाषी नाम मास चाषी माने सेमान पई आउ माने चाषबास करबा संभव होई पारुनी कारण मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे जो चाषबास होउची आउ सेठी मनुष्य कोन दरकार सो चाषी माने हाथ गोड़ जाकी बसिबे हाथ गोड़ बांधी की चाषबास कर्म क्षेत्र आ पाइबे ना सो एड मोडालिटी कोन सब सहायता जाउची आइडेंटिफाइड दैट द मेकानिज्म ऑफ ग्लोबल एंड डिलीवरी aid modalities in an area critically important to agriculture and rural development. It is necessary to better define the exact roles of public and private sector as well as those of donors. So exactly mode and aid modalities and किभली ए जो volunteer organization गुडी को जो दातव्य अनुष्ठान गुडी को दान दउचंती बा डोनेट करूचंती सेगडा को भल भाव प्रांजल भाव तर्जमा करबा होची हमर ग्लोबल सिग्निफिकेंस रो मुख्य अंश कोथि पई दउची डोनर कंट्री गुडिक बा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन गुडिक से गुडिक नै को हिसाब रे व्यवहार करिवे जो विभिन्न अनुष्ठान रहला वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एवं वर्ल्ड जोगुडा को हैंड टू हैंड जोगुडा सब अच्छी बड़ बड़ सब एनजीओ से माने बा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन किभली को उद्देश्य से माने सब डोनेट करछन्ते देश गुडिक ताकू मध्य सेगडा को मध्य देखबा पई पड़िबो तापरे रूरल फाइनेंस particularly an area of critical significance of global concern of agriculture and rural development there is need to pay adequate attention to public financial management of agriculture and rural development जो चाषबास गुडिक प्रचुर परिमाण रे विदेश रे आमे विक्रय करि परिबा सहायता करि परिबा विदेश को को प्रोडक्ट गुडी का हमर डिमांड अधिक अछि ता पर मध्ये फोकस करिथि नेक्स्ट होछि एग्रीकल्चर एंड हेल्थ लिंकेज ट्रेड एग्रीमेंट्स रूरल अर्बन डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एया ऊपर सब गाइडलाइन सब हमर निर्धारण करा जाइछि डोनर कंट्री माने गाइडलाइन सब मध्ये निर्धारण करछन्ति किभली ठीक भाव रे
how properly that funds will utilize, and the world economic, social, and political aspect will grow and develop. The equity treatment among the children and women and deprived persons, underprivileged group of people, equity, status, and standard of living, how they will achieve. All these are the focus point of the United Nations. पृथ्वी विभिन्न देश रे शिक्षार विकास घटाइबा, स्वास्थ्यर उन्नति घटाइबा एवं कृषिर विकास करबा, आधुनिकीकरण करबा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करबा एवं मॉडर्न टेक्नोलॉजी एवं उद्भावन को वृद्धि कराइबा, सामाजिक संस्कार आनिबा हमर जाति संघर मुख्य उद्देश्य। तेणु जाति संघर जो विभिन्न प्रकार अंग रहिला, अंग वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो बा अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, किभली volunteer organization, how the volunteer organization will get help and they will grow and develop in the rural areas in different developed and underdeveloped countries. That is the main focus point of the United Nations. So I completed to all your counseling of different blocks of books, and I wish you that you will secure very good marks in different examinations, and that thank you to all the learners, and learn sufficiently and get knowledge and try to sacrifice for the country, try to save this world environmentally and try to maximize the social welfare. You sacrifice to some extent for our society. How the society will grow and develop, the rural area will grow and develop economically, socially, as well as institutionally. How can we grow and develop the rural areas? Particularly the farmers, how will develop and their standard of living, per capita income will grow and develop. So country will automatically develop. If the per capita income of the individual concerned in the rural area will grow and develop, so that will have a very good impact to hike the national income of the country. So Mahatma Gandhi's viewpoint, the dream to develop the rural area, the country will develop. कारण से महात्मा गांधी कही भारत गाँ गंडा अंचल ही अवस्थित, ता माने गाँ गंडा नहीं आम देश भारत वर्ष बोली कह। So I wish you all to success in your examination and secure a very good marks and attend cordially in your examination papers. Thank you to all learners for your time Thank you, and sir. learning process. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. कंप्लीट कर देली केते गुडी इन्फॉर्मेशन सुना मोठरू तमरो आज हला थर्सडे नै कि थर्सडे आज Yes, sir.